नमस्कार 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 जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भवानी जय शिवाजी। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। और नेशन नाउ है कहां पर? हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। इलेक्शन कमीशन रूल्स, एकनाथ शिंदे सेना इज द रियल सेना, द बो एंड एरो, तीर कमान। एकनाथ शिंदे सेना के बाद ऐसी रूलिंग आ गई है साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, मतलब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की सेना है। सो विच मीन्स द एंटायर एक्सरसाइज being gone through even in the Supreme Court becomes infructuous. Come to think of it, I mean, there was some inkling, sir. There was some things, a few days back, Uddhav Thackeray ji, press conference later, he said the election commission shouldn't come out with a symbol till the Supreme Court gives its verdict. With the ruling on the symbol. Yes, yeah, on the symbols, till the Supreme Court takes a final call or passes an order where the dispute of the and the discussions going on the Supreme Court also gave us a properly indication which was going on when Chief Justice Chandrachud was talking to the lawyers, advocates, concerned advocates. That's right. Is this a case of defection or is this a case within the party, within a party problem? So there was some indications going on that things might go in this particular way, that this is a Sena versus Sena problem. It has got less and to which do. is the real Sena? That's what he asked. In fact, the Chief Justice asked, which is the real Sena? Yes, and exactly. The Election Commission says that the real Sena is the Eknath Shinde Sena. That's it. Yes, that's a big blow to Uddhav Thackeray. That's a big blow to Uddhav Which means, Thackeray. I'm not sure if a decision of the Election Commission of India with regard to election symbols and the party is appealable. I'm not sure. They can always oppose the Supreme Court probably. You got a... Yes, you can, but I'm not sure if the Supreme Court would like to interfere in a decision taken by another constitutional body. I'm not at all sure of that. Right at the moment with us, we've got our old friend Mr. Asif Bhamla of the BJP right here with us. Asif Bhamla ji, namaskar. Namaskar, Rajiv ji. How are you? Absolutely fine. Absolutely fine. Asif Bhamla sahab, we can see the Bhamla Foundation right behind you. Congratulations. Congratulations to you. अभी 10 मिनट पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग ने ये रूलिंग दी है कि तीर कमान का सिंबल जो है वो एकनाथ शिंदे सेना का है और आज के बाद वो बाला साहब आंची सेना नहीं होगी, वो ही असली शिवसेना है. So congratulations to you. क्या बात है, congratulations, and I also just got to know through your channel now. Wonderful. I was just we learn something new every day, right? I wasn't aware about it, and I'm just looking at the various the tweets that have come across and that I just checked. But anyways, well, this is the decision of the Election Commission, and I'm sure it's yet to be argued in the court, and both sides have been putting their front in a very appropriate manner is what I feel. And I'm not sure if it is arguable in the court. I don't think usually the Supreme Court never interferes in a decision of the Election Commission. The date is already there. No? The date is granted. But not for the symbol. But it is not for the symbol. That is for something else. That is for defection. Whether or not it was a defection or a split in the party or what was it. As far as the Election Commission role is concerned, in fact, the Election Commission has ruled on a direction of the Supreme Court. Because the Supreme Court had given the Election Commission the responsibility to decide which is the real Sena और जो actual symbol है वो किसको जाना चाहिए. The Election Commission is given its ruling. You see what happens in a situation like this, it's very difficult for the courts or even for the Election Commission to decide. I believe there was sufficient evidences produced by both sides of the Sena, Balasaheb Sena and Uddhav ji Sena, that about the memberships and the number of people that are on each side of the flock. But apparently, to take a call whether how much genuine or how much non-genuine it was a very big challenge, and is a big challenge for anybody to judge. I mean, for courts aside, for anybody. I mean, I may say I've got, 50 lakh people. I may say I've got, someone may say I've got 1 crore people.
But the final thing, when the situation is, when there's a deadlock and when there is a situation like this, then I think the courts and the election commission is finally, that's my imagination. I could be wrong. I'm not a law, expert on this. But having said that, I think then finally on the basis of the elected representatives, from the right from the MLAs to the member of parliaments, they must have taken a strategic call, and wherein on the basis of that, looking at the numbers being more on the side, and with a defection of 3/4 being, and of course Eknath Shinde was the leader of the house too. So on the basis of that, I think it's done a court, and I also heard that there was one other argument which came across to me yesterday while I was watching some channel, that the chief minister resigned before proving his majority. Had he lost on the floor of the house, still there was an eventuality of a situation where it could be slightly favorable. But having put all this together, I think this is the outcome, is what must have led to this outcome 10 minutes back. So in effect, what has happened is, what has really happened is, Mr. Asif Bhamla, what the election commission effectively has said is there was no defection. What they have said is कि ये असली सेना है और उद्धव जी की जो सेना है वो असली सेना नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे यानी बाला साहब आंची सेना जो है वो असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे जी की जो सेना है वो असली सेना नहीं है। ये तात्पर्य निकलता है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर का। अब दिस इज बाउंड टू बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रवैया लेता है, वी विल कम टू नो ऑन 21st of February when the next date has been given. Unless and until, but sir, if you see, अभी जिस प्रकार से चल रहा था, कल भी अनिल परब and Anil Desai, yes, after the courts, they're coming out, briefing the press, they were saying we want this to go to a 7-judge bench. 7-judge constitutional bench. The indication, bench. yes, the indication was slightly clear and absolutely clear that something is moving, and they fear that things may not go there. To which go their way. Yes, but Chief Justice Chandrachud said very clearly, we cannot allow this to go to a 7-judge bench till we have heard the arguments on merits. Correct. क्योंकि आज तक जो arguments हुई हैं वो सिर्फ technicalities पर हुई हैं, 21st February के बाद merits पर होंगी. Of course, they are always welcome to mention it on Monday morning. And Uddhav Thackeray ji having a press conference a few days back and telling that election commission shouldn't come with a symbol, whose symbol it is, till the Supreme Court takes a stand on. So everything was clear, that even they were slightly within themselves knew that order is coming against them, and this is what followed. Rest is. But the fact is, Asif Bhamla ji, सीधी सादी बात है, majority एकनाथ शिंदे साहब के साथ है, यानी मेजॉरिटी जो है वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ है, उसमें कोई दो राय नहीं है. दे प्रूव्ड देयर मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. मतलब आप जो मर्जी कह लीजिए, बाकी सब तो भाई बाकी सब तो क्या है कि वो मिथ्या है. बाकी सब जो है आप टेक्निकली जितना मर्जी आर्ग्यू कर लीजिए, फैक्ट इज 53 में से 40 लोग इधर आ गए, उधर आपके जितने भी एमपी थे उसमें से 13 एमपी इधर आ गए. मतलब आप कुछ बनता नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. मतलब आप कुछ भी कर देखिए, दरअसल ये मसला जो है is an internal issue between the Senas, and I, of course, as a BJP spokesperson, we have very little to do on this. Yes. You see, our role was that is the very official restricted position. and refined to what what we have to do. I mean, had the decision come the other way, we would have to look on the other avenues and the other aspects of ensuring that we complete this term. You see, but I mean, this is something which they have to sort it amongst themselves. And I mean, what I'm surprised is that, I mean, a party which was in power, I can understand people leaving a party when it's out of power. Here there is a party which is in power. You have your chief minister at the helm of affairs, and you do not get to know their shortcomings, their issues, and being in the fullest element of the power at all levels. And सरकार आपके नाक के नीचे से चली जाती है, और आप you see, आप एक मुख्यमंत्री, आपका विजिलेंस क्या है, आपने
आपने जो आपके 2.5 साल के कार्यकाल में कितना कुछ उन 40 लोगों ने जिन्होंने आपको छोड़ कर गए, उन्होंने कितना बर्दाश्त किया होगा, या जी उन्होंने किन परिस्थितियों से गुजरे होंगे कि that would have led for them to take up this challenge, which has which has resulted in an outcome of a very enormous exercise. It's not an easy exercise. Let me say this to you. It could be a loss. I mean, the step that Eknath Shinde ji has taken is something which is not is not some step which any subtle human being can even imagine to, because it could have boomerang. It could have Yes. worked the other way out. Absolutely. So that was Absolutely. something which was a very challenging thing, and I think he crafted it in a very appropriate manner. He had the confidence overall, and of course, which has given this result, which has been out 15 कहने का minutes मतलब ये back. हुआ कहने का मतलब ये हुआ आसिफ भामरा साहब कि इस निर्णय के आने के बाद सीधी सादी बात है, सरकार तो पहले से ही स्थिर थी, लेकिन अब कानूनी तौर पर भी इसको बिल्कुल स्थिरता मिल गई है। सीधी सादी बात है, इसमें there is no confusion anymore, very frankly, not in my mind anyway, because the Supreme Court anyway, in all likelihood, this particular bench will be bound by the decision of the Election Commission, because it is this bench which had directed the Election Commission to take a decision on the symbol. ये जो नहीं, मुझे शिवसेना का जो खुशी symbol होगी, है, जी। मुझे खुशी इस बात की होगी कि आगे लोग जो अमूमन इसे असंवैधानिक सरकार कहा करते थे अपने आप को सूट करने के लिए, कम से कम अभी कहीं ना कहीं कानून के तर्क के आधार पर they will feel that we should roll back on our statements, and we should accept and the we should be verdict of more the responsible. court. मेरा ये कहना है, Yeah. चलिए roll back छोड़िए, at least people should be more responsible while talking about various Exactly. governments. And the Very cabinet frankly. expansion, sir, is going to be any time. Yes, You know, that means now we can have the cabinet expansion. So Yes. Bachchu I Kadu hope of all the persons who were saying आता होना रहा है cabinet expansion होना रहा है आता होना रहा है 18 तारीख के नंतर होना रहा है, so ultimately Bachchu Kadu gave us a clue that's going to be a cabinet expansion and everything is falling in place. Yes, and it has come when just around शिवरात्रि. Yes. साहब शिवरात्रि की रात जो है आज रात 12 बजे से लग जाएगी, Exactly. तो शिवरात्रि को गुड न्यूज फॉर मिस्टर एकनाथ शिंदे। शुभ मुहूर्त। बिल्कुल जबरदस्त। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बनती है, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट आसिफ भामरा साहब, यू हैव नेवर टॉक्ड इल ऑफ एनीबडी। मैं जानता हूँ आपको, सालों से जानता हूँ मैं। No, आपने it's not required. कभी भी आप जिस भी पार्टी में रहे हों, आपका विरोधी पक्ष हो, आप सत्ता पक्ष में हो, जिसके भी साथ हुआ, जब आप दत्त साहब के साथ थे तब भी आप ऐसी थे, उसके बाद आप एनसीपी में गए तब भी आप ऐसी थे। आपने कभी भी आपने कभी भी किसी की बुराई नहीं की है, सीधी सादी बात है। आज करना पड़े। I don't think so. ये मेरे मिजाज में नहीं है, ये मेरे मिजाज में नहीं है। I think Pradeep ji, I think Asif bhai would rather retire from politics than indulge in this kind of thing. ऐसा काम नहीं करेंगे। आप साइकिल ट्रक की बात करें तो साइकिल ट्रक को तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। I try to pick on a lot of Datsabs because of course I have been a product of him. Yes. And I being in the BJP today also certainly I mean, you know, he is the one who brought us into politics, so That's it's right, not, he did. no harm So- in saying that. so I mean, today you know. how- and I but think And I am asking you this, Yes. and I am asking you this. Yes. आदित्य ठाकरे। आसिफ भामला साहब, चलिए आदित्य ठाकरे के उसमें आ जाएंगे। एक सेकंड सर, आसिफ भामला जी, देवेंद्र फडणवीस साहब जो हैं ये बार बार कह रहे हैं कि जो शपथ ग्रहण हुई अजित दादा पवार के साथ, वो शरद पवार जी के नॉलेज में थी। हम भी ये मान करके चलते हैं। मैं आई अज्यूम देवेंद्र फडणवीस साहब इज टेलिंग द ट्रूथ, बिकॉज़ फडणवीस साहब झूठ नहीं बोलते, सीधी सादी बात है। मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं साहब, जब से उनको जानता हूं वो झूठ बिल्कुल बोलते ही नहीं है, सीधी बात है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, आप एनसीपी में थे, अजित दादा पवार में हिम्मत नहीं है कि शपथ ग्रहण कर लें देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ विदाउट इन्फॉर्मिंग शरद पवार। क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है साहब? बताएं। देखिए, जो अटकलें लगाती है, ऑफ कोर्स हम तो अपने नेता आदरणीय देवेंद्र जी की बात को, जैसे कि आप ही ने कहा कि वो कभी झूठ नहीं कहते, और ये आपका तजुर्बा है। यू हैव बीन इन द मीडिया फॉर सो लॉन्ग टाइम, यू मेट कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम वेरियस पार्टीज, वेरियस लीडर्स फ्रॉम वेरियस माइंडसेट्स, विचारधाराओं के बीच लोगों को। तो यदि आप भी कह रहे हो तो दिस इन इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट। सो मी एंडोर्सिंग दैट इज समथिंग नॉट वेरी डिफरेंट एंड न्यू टू what the arrangement is. But if you see, if you try to connect, जो देवेंद्र जी ने कहा अपने इंटरव्यू में, जो मैं देख रहा था, कि अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़ें
तो जी। आपको स्वयं ये बात मेरे से ज्यादा कहने से, मेरे प्रकट करने से ज्यादा आपको ये बात तथ्य और सत्य लगेगी कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। अगर आप देखें तो यहां जब एमवीए के कार्यकाल में मीटिंग और बैठकों का दौर चल रहा था, वहां पर यकीनन हमारे आदरणीय जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब was having a meeting with the honorable prime minister, and that can't be denied, you see. And that meeting was in the fray. उसी के 2 दिन बाद ये जो एमवीए की सरकार में जब मीटिंग हुई, तब अजीत दादा मीटिंग छोड़ कर गए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम सुबह देखते हैं कि डायरेक्ट शपथ विधि। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है जुड़ रही है, और एक एक चित्र ऐसा निर्माण कर रही है कि यातायात यकीनन, क्योंकि मुझे लगता है कि पवार साहब एक निहायत ही शातिर राजनेता हैं। उनका एक बड़ा आदर, एक सम्मान है, सिर्फ राज्य में नहीं, आदरणीय पंत प्रधान जी भी उनका बड़ी इज्जत करते हैं। आपने देखा है, हम सब जानते हैं। और मैं तो खैर, मेरे तो खास तौर पे उनसे मुलाजिम है ही है, तो मैं तो ये कहूंगा ही। तो ये सारी बातों का कले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इट डज लीड के डेफिनेटली पवार साहब को जानकारी थी, बिकॉज अजीत पवार, दादा पवार में इतना बड़ा एक निर्णय लेने का। और ये तो मैं तो छोड़ दीजिए, आप छोड़ दिए, ये खुद जयंत पाटिल जी ने इसका इजहार किया है भाई। हम तो शायद गलत बोल दें, आप शायद हटकर बोल दें, लेकिन जयंत पाटिल जी जो प्रदेश अध्यक्ष थी, उन्होंने ये कहा कि भाई कदाच असं काय परिस्थिती झालं असेल की जेव्हा पवार साहेबांनी अजितदादांना सांगितलं असेल की तुम्ही असा पहाटेची शपथ घ्या. दिस इज ऑन रेकॉर्ड. Correct. So Absolutely correct. I mean, forget me and you talking about it. This discussion. So the has question been, arises. No, Rajiv ji, this discussion has taken off after the state president, one of the tallest leaders of the NCP, started off with that. यदि वो नहीं बोलते तो शायद ये प्रश्न जो TV9 के पत्रकार हैं उनसे पूछते भी नहीं देवेंद्र जी से. That's right. Now I would like to ask you one thing. This leads us to the other question, because you know everybody very well. अच्छा भावना साहब, आप दोनों पार्टीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. अभी आप बीजेपी में हैं, लिहाजा आपकी लॉयल्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट भी है शरद पवार जी के साथ. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाई इसमें इसको एडमिट करने में प्रॉब्लम क्या है? मेरा ये कहना है कि भाई वी ट्राइड समथिंग एंड देन वी वर्कड इट आउट कि यार ये हमारी पार्टी के हित में नहीं है, तो हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया. तो उसमें क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता शरद पवार साहब को ये मानने में, पब्लिकली मानने में तकलीफ क्या है कि भाई हम लोगों ने देखा कि माइनॉरिटीज जो है वो हमारे खिलाफ हो जाएंगी, या ये सब हमारे खिलाफ जा रहा है, या इस तरीके से बीजेपी के साथ हमें संगठन नहीं करना चाहिए. मतलब he can easily say so. Sharad Pawar Saab is such a respected figure all over India, especially in Maharashtra. True. He will not lose anything if he actually says it. I don't know why he is denying it. I don't understand. What do you think? Well, you see, because the hobnobbing was very smooth, and I mean, of whatever I have known, he has been. I have worked for more than about nearly 19 to 20 years with Saab, and knowing he has a plan always up in place. There's always a plan A, B, and C. And you know, I can say that because I was one of his blue-eyed boys. Yes, I you was were. in the NCP, and so I do take pride and prestige in all of that. But certainly there must be a plan A and B and C. So maybe that is what it is. And well, who has the audacity or who has the capacity to to even tell Pawar Saab he knows what to do best. You know, आज तक के अजीत दादा पवार डिनाई करे कि मी या विषयावर पहिल्या दिवसात नाही बोललो, आज नाही बोलतोय आणि उद्या पण कदाच मी बोलणार कधीच नाही. So you can't stop anybody. You see, this is democracy. Yes. Anybody who wants to refrain from saying something, or I mean, as I said, this whole rigmarole only took off after the NCP initiated that, and Right. that too coming from a state president like Jayantram Patil ji. Right, उन्होंने प्रदीप जी, आपको पूछा जा रहा है. निदान में ये बोलते today- नहीं तो ये शायद आज ये चर्चा का विषय नहीं होता, हम इसकी बात नहीं करते शायद आप हम आज. बाबा जी, आज जिस प्रकार शरद पवार जी ने रिप्लाई दिया पत्रकारों को कि आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, मला देव फडणवीसचा महत्व, he didn't want to elevate his status by talking about this particular subject. Was it arrogance? Was it trying to belittle Dev Fadnavis?
What was he trying to do? Or trying to escape. Or trying This to was the right words he used. मला देव फडणवीसचा महत्व वाढवायचा नाही या विषयावर बोलून. So is he trying to belittle Mr. Fadnavis, or is it what is he trying to do, Sharad Pawar? No, I mean, very honestly, I don't think Pawar Saab is a man who has any arrogance, and I will certainly not, be a party to that statement, because I know how rational he is and how down to earth he is. But again, politics is politics. So he knows what best to answer, and he's always been, Pawar Saab has always been that way. I mean, he's very upfront and upright. Ke bhai, मला या विषयावर काय बोलायचं नाही. But the subject ends there. You see, you can't. But that was Sharad Pawar's always statement. He's always measured by his talks. मला बोलायचं नाही, and then he ends it there. Now today he's gone one step ahead. But he said something else also. Yes, he said मला फडणवीसचा महत्व वाढवायचा नाही. This is a statement that usually 99% of the time Mr. Pawar never makes. Pawar will never say. But he has said it today. But he also said another thing, by the way. 3 days ago, he also said, Mr. Pawar also said, I thought Mr. Fadnavis was a gentleman. Obviously, I was wrong. Now, that is huge for Mr. Pawar. What has happened? Mr. Pawar never used to talk like this. We have known him for years. I have known him since 1986. मतलब पवार साहब ने जिंदगी में आज तक कभी इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया. आसिफ हमला साहब. What has happened? I certainly agree. I certainly agree. I do now. I would only I could only say that maybe Devendra ji has hit the nip in the bud. So or Mr. Devendra Fadnavis is possibly the first politician in Maharashtra to have actually rattled Sharad Pawar. I think he's done that. As I said, everybody keeps, the respect, the genre of politics of Pawar Saab in its place. And, these statements don't matter because Pawar Saab is not someone who will keep this to mind. And Devendra ji is, of course, it's accepted in the state of Maharashtra. I mean, if you see, he was a successful chief minister for the past full 5 years. The only CM with a full term. And आज अगर आप देखो तो विकासशील और प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कहलाए जाते हैं. You see the fast track in which the progress of the state is running in the time of 7 months that they've taken over the government. You see the projects, the gati, जिस गति से काम चल रहा है. He's a workaholic man. He's having six portfolios, and he's a guardian minister for on 6 various fronts, and running the state government. Leading this along with Eknath Shinde ji, and in such a chaotic situation where there is where there is these technical issues with regards to court, the authenticity of the government, which is at fray, and in spite of all of that, with the kind of work I understand he works for at least 19 hours a day, or whatever little I know about my leader Devendra ji. So I mean, everybody looks up at him, and the subtleness in which he works, and let me tell you, मैं तो एक बहुत मामूली सा कार्यकर्ता हूँ. उनकी विश्वसनीयता, उनकी महानता के बारे में हम जितना भी कहें कि a leader of his stature, even a small person like me, if I have put across an SMS for a query or some issue, he will reply you back in the next 3 hours. This is the goodness of this leader, and that is something which I have seen in Devendra Fadnavis ji, which I have not managed to see in many other leaders. You see, the reply could be yes or a no, but he's prompt, he's reciprocative. That is something which has made him what he is today, and which is why we all are in awe of him, and we all would love to work under his leadership, and that is given. अभी आपने देखा होगा नासिक में भी हम अभी एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ पार्टी का, जिसमें हम भी सहभागी थे, being the spokesperson. We were there for 2 days at शिरडी नासिक में आगे. तो वहां भी उन्होंने मतलब जो कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए, जो लोगों को कहना चाहिए, जो कमियां हैं, वो खुलकर उन्होंने ओपनली कहा कि भाई हमें यहाँ या ये बदलना चाहिए. हम सरकार में, तो इसका मतलब नहीं कि हम इसे एंटाइटलमेंट समझकर चले.
हमें नम कर चलना है। नॉट ओनली दिस, इवन अकलियतों के विषय में भी आपने देखा होगा, जी। आज बोरा समाज को, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, you see Yes. today the way the honorable prime minister resonated the Yes. entire program, Yes. I think it has sent a very strong message by the prime minister. Yes. The visit that honorable Devendra Fadnavis ji has done to the Bori Mohalla, where he went and he ensured that whatever is the paralysis in their जिसे ये कहते हैं कांग्रेस वाले या अन्य वाले कि भाई ये जो है जात पात तक सीमित रहते हैं, तो ये बातों से परे हटकर उन्होंने जो फास्ट ट्रैक पे तमाम जो परमिशन थे, उन्होंने कहा वन स्टॉप शॉप पीरियड, नथिंग डूइंग, आई एम गोइंग टू इंश्योर दैट ये जो आपने इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट जो एक समाज के हक में लिया है, ये एक रोल मॉडल प्रोजेक्ट हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों का की तरफ से ही क्यों ना हो, यू नो। तो ये चीजें हैं जो रह जाती है। और आज हम बातें करते हैं लोगों को यूसी कम्युनल तरीकों से, शिवाजी महाराज के विषय में कुछ नेता बात कर जाते हैं। तो अगर आपको अपीजमेंट का काम करना तो ये कंस्ट्रक्टिव काम करके आप अपीजमेंट लीजिए मजहब की, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आसिफ भाई एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। यू आर अ मुस्लिम योरसेल्फ, आप खुद मुस्लिम, व्हाई शुड यू जॉइन द बीजेपी? आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन करी, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि बार बार यहाँ पे कांग्रेस के लोग आते हैं, बाकी अन्य लोग आते हैं, पुराने एनसीपी के भी लोग आते हैं, बार 2002 की मेंशन करते हैं। और जब मैं उनको पॉइंट आउट करता हूँ यार गुजरात की जरा हिस्ट्री भी देख लो, 2002 by the way was the smallest riot that took place in Gujarat, incidentally, in case you want to know. उसके पहले चिमन भाई पटेल के वक्त, और उसके पहले ना जाने कितने सोलंकी साहब के वक्त ना जाने कितने राइट हुए, उसमें 3000 4000 5000 लोग मरे, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। नेली के बारे में कोई बात नहीं करता है, हाशिमपुरा मलियाना के बारे में कोई बात नहीं करता है, भागलपुर के बारे में कोई बात नहीं करता है, मतलब और तो और छोड़ दीजिए, भिवंडी के बारे में कोई बात नहीं करता है, सिर्फ 2002 सबको याद है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुसलमान हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन करी, वो जरा बताएं। आप देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता सरकार में रहे हैं, आज हम लगभग 8 साल पूरे कर रहे हैं, और ये तो छोटे मोटे जो राइट्स तो इतने भयंकर हुआ, यू हैड ट्रकलोड ऑफ राइट्स, भागलपुर राइट्स, ये राइट्स, वो आए दिन हमको सुनाई देना पड़ते थे। ये राइट्स कांग्रेस की सरकार में होते थे। मैं मतलब किसी को गलत नहीं ठहराता, ठीक है, वो होते होंगे, जरूरी नहीं कि उन्हें उकसाया जाता होगा, जरूर होते होंगे, किसी कारणवश होते होंगे। लेकिन अगर आप देखें आज जो दहशत मोदी जी की है, पूरे विश्व में एक लीडर माने जाते नंबर 1, यही पाकिस्तान कमबख्त जो हर दूसरे दिन यू नो हु मेड लाइफ हेल फॉर इंडियंस, द काइंड ऑफ फियर in which we Indians, I'm not saying Indian means सारे लोग उसमें जब इस किस्म के ब्लास्ट होते 26/11 वो उसमें उन्होंने वो देखकर नहीं किया कि मुसलमान बच जाए और गैर मुसलमान जो है शहीद हो जाए। तो इस किस्म के खूंखार दुश्मन जो हमारे हैं, जो हमारे नेबर कंट्री, जिस देश में हमारे अगर आप देखें तो नॉन मुस्लिम्स की क्या अवस्था है वहां पर, आप तो उस बनिस्बत में आज यहाँ इस सरकार में मुसलमान बहुत खुश है। मुसलमानों को वर्गलाने का यदि कोई काम करता है तो ये गलत बात है। और मैं तो कहता हूं मुसलमानों को कि वक्त टॉक, यदि आप 10 कदम चलोगे तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी 100 कदम चलेगी। आप ये कहोगे आप डेडलॉक में क्यों जिंदा हो, क्यों वाबस्ता हो? आज मुझे बताइए, योजनाएं क्या मुसलमानों के लिए अलग की जाती है? जो अनाज बांटा जाता है या कोविड में जो वैक्सीन दी जाती है, क्या धर्म और मजहब पूछकर दिया जाता है? या योजनाएं जो प्लान की जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, क्या मुसलमानों के लिए अलग हाईवेज और गैर मुसलमानों? सो दिस इज सो हम्बग, यू गॉट टू कम आउट ऑफ दैट। मुसलमानों को तो ये सोचना है सरकार में जिनसे हम अपने काम ले सके, हम अपनी योजनाओं को अंजाम दे सके, जिनसे हम अपना यू नो जिनसे कौम को फायदा हो। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। यही मानसिकता होनी चाहिए अकलियत के लोगों के लिए। हम कब तक उस गुर्बत और जाहिलात में जिंदा रहना चाहिए? और फिर
हमें इसके पहले जो सरकारों ने क्या इतना बड़ा अमल लिया, सिवाय टोपी पहनकर खजूर खिलाकर इफ्तार डिनर्स में हमें खुश करने के अलावा हमें इससे ज्यादा और क्या मिला है, मेरे ये समझ में नहीं आता है, कम से कम अकलियत की कौम के लिए। तो मैं सोचता हूं कि आज जो मैं जहां हूं मैं खुश हूं, और आई एम विद अ लीडर हु इज अपराइट, जो अपने मजहब का इज्जत और एहतराम करते हैं। ये नहीं कहते कि भाई जरूरी नहीं कि मैं टोपी पहनूं, और ये these optics is not what is believed there, Right. but that's not even required. It's not When required. it comes to the welfare of the people of the community, Incidentally, that is more important. Mr. Bamla, let me inform you incidentally, as of January this year, as of January 2023, and Pradeep ji and I have discussed this over here so many times before, and we are discussing it with you for the first time. India now has the largest number of Muslims in the world, in case you want Of to know. course. Now there are almost 25 crore Muslims in India, which is much more than Indonesia, by the way. We very soon we won't be a minority at all. Muslims are not a minority even now. Muslims Exactly. are the second largest majority. Exactly. Muslims are the second largest majority, sir. Yes. And what less, in the national conclave, मोदी जी ने कहा कि भाई यदि आपको मुसलमान मान के चलिए कि अगर वोट नहीं भी दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे परे करें या परहेज करें, आप जाइए उनके पास, सिर्फ क्या वोट लेने जाने का ही एक माइंडसेट होना जरूरी है क्या? Right. आप जाइए, ठीक है, वो वोट उनकी इच्छा है, भाई नहीं दे तो बहुत अच्छी बात है। हर राजनेता चाहेगा कि भाई हर मजहब के वोट हम चलो ये तो हिंदू मुस्लिम बात हो गई, चलो this is necessary because I really wanted to know why you joined the BJP. सर आप ये बताएं, जो प्रदीप जी पूछना चाह रहे हैं आपसे, मैं पूछ लेता हूं छोटा सा, उसके बाद प्रदीप जी आपको डिटेल में पूछेंगे कि साहब मुंबई के विकास के लिए जो अभी इतनी बड़ी मतलब जबरदस्त योजनाएं जो अभी सिर्फ अनाउंस ही नहीं हुई, हमारे सामने हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं, बिकॉज बाय 2023 द कोस्टल रोड विल बी कंप्लीट, सितंबर 2023 आई थिंक द ट्रांस हार्बर लिंक विल बी कंप्लीटेड, और उसके बाद ना जाने क्या क्या और होने वाला है। उससे आपको क्या लगता है कि मुंबई का असल में क्या फायदा होगा, और मुंबई कर जो है क्या बीएमसी के चुनावों में इन बिग टिकट बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से, जैसे मेट्रो हो गया, बाकी सब हो गया, उसकी वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? Or sir, before that, can I ask him something very close to Asif Bamla? You know, Bandra Mahim mein aaj Ashish Shelar says he has cancelled the cycle track, or that Aditya Thackeray, both are your close friends. Now you have to take a stand. Aditya Thackeray versus Ashish Shelar, 200 crores worth cycle, 208 crores cycle track जो उन्होंने decide किया था, Bandra to Mahim has been cancelled. That was announced by Ashish Shelar just now in the evening. So what is it? Is development? No, let me come to the cycle track. Yes. This issue has been raised by a Congress MLA also earlier, that the cycle track work is not appropriately happened. Now, whether it has happened or no, and how much it has happened, let me be very honest, I am not aware about that. And but I for a fact know that this was put up by an MLA from Bandra East, who mentioned that the cycle track thing that has been that has been executed from Bandra. You're talking about the same one from Bandra East to West, मुझे लगता है, if I'm not mistaken. Bandra to Mahim, the cycle track, probably connecting Kadeshwari, your Carter Road and bandstand. Starting from near the bandstand. Yes, yes. And where the court has already expressed objections to it, yes. ये आवाज पहले भी उठी हुई है, और I mean, of course, as an environmentalist, of course, I'm always in favor of cycle tracks. In fact, I had proposed this quite a few times, and I have been for it. But now that this announcement just recent today? Just today, just before we sat for the show. 45 minutes ago. 45 minutes ago. No, so I got to just take a little heads up on that, and only then will I be able to answer, because I myself am unaware about that. So it's better to not speak if you have half knowledge. Yes. I'll rather revisit that, and let me come back to you on that. Right. There was always, I think Ashish Shelar was always objecting one particular development plan Aditya Thackeray had floated. It started from Bandstand, Carter Road, then it goes towards Kadeshwari Mandir, including the Bandra Fort and all those kind of things. So probably this is one of them with the cycle track. You see, as an optics, people may oppose party को लेकर, party के वो कहते हैं ना,
जब जो सरकार में रहता है वो अपने तौर तरीके से हर चीज चलाता है, और हर चीज चलती भी है। और आपने देखा होगा पिछली सरकार में भी यही हुआ, जो नियोजन किया गया था, उस पर तुरंत आते साथ उन सरकार ने फेरबदल किया। आज यहाँ फेरबदल हो रहे हैं, लेकिन आज खुशी की बात है कि आज मेट्रो चालू तो हो रहा है। आज आपका मुझे बताइए, I am the man who raised the first noise when RA was disturbed, when our trees, when our natural habitats were being troubled. I was the one, and I protested against the Bharatiya Janata Party also then. Let me tell you this, and on record, and I have no qualms about saying this, because again I'm an environmentalist first. But then when we saw that the carbon footprint that is curated by a deadlock in the policy, देखिए पर्यावरण एक अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको पूरे विश्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अगर किसी विषय पे बात किया तो उन्होंने उन्होंने पर्यावरण के विषय की बात की, अबाउट द हाइड्रोजन एनर्जी बात की है या अन्य बात की है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये सोचिए कि आपके एक पैच को आप डेवलप नहीं करने से पूरे शहर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर देते हो। वहां पर जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, जो कार्बन एमिशंस क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लीशन एंड द बैड रोड्स that are there in the city, that contributes also equally so much to the to the pollution levels of the city. Anyways, we are going through an air pollution problem in the city also. That's right. Today our AQI is almost equivalent to Delhi. Exactly. तो ये विषय को ये देखिए, पर्यावरण सभी पार्टी के लिए लागू है। आप बोलोगे भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग है या शिवसेना के लिए अलग है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये सभी के लिए लागू है। इट्स अ कॉमन इशू। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, आने वाले दिनों में आप ये भी देखिएगा कि चुनाव पर्यावरण के इख्तियार में लड़ा जाएगा। और आज भी मैं आपको ये बताऊंगा, राजीव जी शायद जानते होंगे क्योंकि वो भी पर्यावरण प्रेमी है, कई यूरोपियन देशों में कई पार्टियां हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है, एंड दे वन इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन canvas and one platform of environment. And let me tell you, in days and years to come, in the generation next, this is going to be sustainability, climate change mitigation is going to be an issue on which major elections are going to be fought. Right, but the only thing is, at the moment, considering the pace at which infrastructure is proceeding in Mumbai, I don't think we can do very much with regard to AQI, that is in terms of air quality control or in terms of the kind of pollution which is there at the moment in Mumbai, क्योंकि हर जगह पर आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन को आप रोक नहीं सकते हैं, भले ही आप बड़े बड़े एयर फिल्टर टावर्स लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। नाउ हैड इट नॉट बीन फॉर द फैक्ट कि हमारे पास संजय गांधी नेशनल पार्क है, हमारे पास आरे फॉरेस्ट है, और यहाँ से लेकर के अफ्रीका तक अरेबियन सी है, बीच में कोई बिल्डिंग नहीं है। अब इतनी बिल्डिंग हो रही है सर, तो उसमें क्या करोगे? कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आपसे बिल्डिंग्स होना अगर आपने देखा दुबई का और यूएई का जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स होना कोई इज नथिंग रॉन्ग। इट्स वी आर इफ यू आर कन्वर्टिंग एसआरए प्रोजेक्ट्स एंड कन्वर्टिंग दोस dirty drainage systems, those bad systems of the पाइपलाइनें वगैरह, इनको हम कन्वर्ट करके एक अच्छी सुंदर बिल्डिंग और इमारतों में कन्वर्ट करते, तो ये एक अच्छी बात। लेकिन ये जो पैसा और ये जो एक्सचेकर जो महानगर पालिका को जो कंट्रीब्यूट होता है, इसका खर्चा क्या हम, इसका यूटिलाइजेशन क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। आप समझिए क्यों कि हमारा कंस्ट्रक्शन आप कितना भी करिए, लेकिन देयर हैज टू बी अ पैरेलल infrastructural development and growth which is equally very important, and I think this government is looking forward to that. अगर आप देखें तो सारे concretization of roads, एकनाथ शिंदे जी ने इसको जाहिर किया कि सारे roads को जो हम concretize करना चाहते हैं, और and that was also the honorable deputy chief minister also, so they're working on that. अगर आप देखें तो मेरी खुद चहल साहब से भी एक विषय पे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो इवन द ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, महानगर पालिका के कई सारे करोड़ रुपए आपने फिक्स बैंक डिपॉजिट्स में आप रख देते हो, और वो पैसा जो है जनता के हित में, तो आज जो ब्यूटिफिकेशन जो अमूमन सीएसआर के वो भी अभी जो है महानगर पालिका के फंड से एक रेलेवेंट तरीके से किया जाएगा।
उसके लिए भी Pradeep ji, महानगर you're asking पालिका something. किसी या बामला जी, आप संजय राउत को कैसे आप कंट्रोल करोगे? संजय राउत वाज इन रत्नागिरी, इन सिंधुदुर्ग, एक एक जो बैनर्स लगाए थे कि इलाका आपका, धमाका हमारा, तो कौन सा इलाका और कौन सा धमाका, तो कंटेंट वो जरा समझ में नहीं आया। और फिर कहना कि मुझे अरेस्ट करके मुझे अंदर मारने की साजिश था, you were going to eliminate him within the jails. एक एक startling revelations are coming the way Sanjay Raut, the way he says मैं और भी एक से एक बड़ा बड़ा expose करने वाला हूँ, किस प्रकार क्या क्या हम पे साजिश किया था, and then you know how do you going to do it, because he's in the entire tour of Konkan and you have done very well. BJP has done very well in the recent elections in Konkan, very well. है तो पता नहीं वो कितनी अंगार बखार करेंगे। मैं वो शब्द वापरना नहीं चाह रहा हूँ अंगार को लेकर, लेकिन अब देखिए अब उन पर हम क्यों अंकुश डालें? उनकी पार्टी ने ये सोचना चाहिए कि उनके कारण कितना फायदा हुआ है और उनके वजह से कितना नुकसान हुआ। खैर रत्नागिरी जाए, हर जगह जाए, संविधान हर एक को एक अधिकार देता है, वो भले उनके विभाग में जाए, उन्हें चुनौती दे, वहां के लोगों ने फैसला दे ही चुके। आप तो देखे हो कि अभी जो चुनाव हुए सिंधुदुर्ग रत्नागिरी में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुमत सरकार आई, राणे साहब नीतीश जी एक मुख सरकार वहां पर सारे नगर सेवक चुनकर आए, वहां पर हमारा महापौर बैठा हुआ है। तो वहां जाने अभी मैं तो कहूंगा उनसे कि थोड़ी देर कर दी आपने जाने में, थोड़ा जल्दी जाते तो शायद कुछ और आपको कुछ शायद ज्यादा आपके नगर सेवक और प्रतिनिधि चुन कर आते। लेकिन ये सब जो बातें मुझे बताइए, कोई रेलेवेंस है कि कोई किसी को मारकर क्या हम व्हाई इज द भारतीय जनता पार्टी गोइंग टू टेक अ स्ट्रेस एंड अ हेडेक ऑन देयर ओन ब्लडी हेड? तो बामला जी जिस प्रकार से मतलब हम उनके लिए सहानुभूति का एक मसौदा तैयार करें कि भाई को सहानुभूति हो। So Raut's allegations and then Jitendra Awad's allegations. Jitendra Awad in fact said his daughter also came today and said yes, there's a threat to our entire family. So ab dekho, Raut MP, Jitendra Awad MLA, one journalist eliminated in Konkan, then there was another MLA who was threatened. तो एक के बाद एक incidences जो चल रहा है, that sort of see कि क्या law and order collapse होने वाला है? What is the exact situation? क्या law and order collapse होगा? मुझे आप बताइए ना, क्या law and order किस तरीके से collapse होगा? जितेंद्र अवार्ड चीज अपने अब देखिए बॉस, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बेचारे, he's your old friend, he's your very old friend, very dear, not old, new friend also and current friend also. Due respect, Jitendra, we've been in youth Congress days together. Yes. And of course, I don't know much about Sanjay Raut ji. Due respect to him also. But I mean, ये सब चीजें तो चलते रहता है। अब जब वो सरकार में थे तो हमने भी ये कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर में कोई मसला है। अब हम है तो वो कह रहे, तो ये चीजें वाबस्ता रहती रहेगी। लेकिन राज्य और सरकारें चलती रहेगी, इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आसिफ भावना जी, आप इसी तरह रहें. You remain as candid and truthful as honest, like this only. It's a real pleasure talking to you. This was really and truly wonderful. And congratulations to your government. The Election Commission has ruled in favor of your partners. This congratulation is not to us, because this has gone to the Eknath government faction. But they are part of your government. Congratulate them. But they are part of your government. It brings about a constitutional and legal stability to the government. They did fight tooth and nail. They had a good fight. They had the right people in the right direction. Right. They didn't have people. No, one more small thing I would say. They didn't advise what the Supreme Court should do and what the Election Commission should do. So that was some rationality which I saw in the Shinde camp, and things worked out well for them. And Eknath Shinde, before any press conference or before any media or anything, Mahan Shakti Maza, and he always says the big three: Narendra Modi, Amit Shah, JP Nadda. That's right. So he's more from the BJP than from the Sena. Well, when you're in an alliance, we have to be for each other. That's like right. we are for each other, and we're happy the way things are going. Right. Across. So Mr. Asif Bhamla, great pleasure talking to you, sir. Wonderful talking to you. Thank you so much. Really and truly lovely talking to you. Please keep it up. Nice talking to you, Pradeep ji. Nice talking to you, Rajiv ji. And look forward to doing many more. Thank you very much. So much. Great pleasure. Appreciate. God bless. Thank you.
Mr. Asif Bamla, being very candid, very honest, something somewhat unexpected.